So, dear student, today we shall discuss first unit, that is matrices of BTech first year engineering mathematics level 1. Now you see, matrix is very elementary for engineering student. Basics you already studied in your plus 2 classes. So introduction of this matrix is nothing but matrix are like the superheroes of linear algebra. They are array of numbers, symbols, expressions, functions in rows and columns, and they can do some pretty cool things, and it will be used to solve linear simultaneous equations having more than 3 or 4 or 5 variables. So before starting this, we shall discuss some basics of matrix. So let us know what is the order of the matrix. So you see here, a matrix with m rows and n column is called an m by n. m by n, ये जो मैट्रिक्स है आपको, ये n by n मैट्रिक्स से हम डिनोट करते हैं. मैट्रिक्स को हम n by n मैट्रिक्स से हम डिनोट करते हैं. मैं थोड़ा सा पेन को इधर ला रहा हूं. So this is denoted by m by n. You see here, मैं underline कर रहा हूँ, ये m by n matrix हो गया. Elements are nothing but the individual entries in the matrix are called its elements. मतलब ये function भी हो सकती है, कुछ भी. अगर हमने ये matrix लिया तो ये अब मान लो A, this is A, B, C, here 2, 3, 5. These are nothing but these are known as elements of matrix. So you already know these things in your plus 2 classes you have studied. Now we shall study some types of matrix. So type of matrix are nothing, you know, square matrix. Square matrix, a matrix in which number of rows and columns are equal, is known as square matrix. तो ये जो ऊपर मैट्रिक्स था, it is not square. इसकी रो 2 है और कॉलम 3 है, so it is 2 by 3. अब एक और मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख दूं, A, B, 2, 5. Now it is square matrix. It is 2 by 2 matrix. So similarly we have row matrix. Similarly we have column matrix. A matrix containing only column is called column matrix. A matrix containing only row is called row matrix. We also have zero matrix. A matrix in which all elements are zero is called zero matrix. Apart from zero matrix, an important matrix is there which is known as identity matrix. So a square matrix in which all elements of principal diagonal are unity and all other elements are zero is called identity matrix. तो ये identity matrix देखें, एक 2 by 2 का identity matrix. This is 1 0 0 1. This is identity matrix. We can denote this by I. Now matrix operation, you already studied in your lower classes. What are matrix operations? Matrix can be added. There is a scalar multiplication. Two matrix can be added. Corresponding elements we can add. Scalar multiplication. If a matrix is multiplied by a non-zero number, then each element of matrix get multiplied. उसको scalar बोलते हैं. So matrix multiplication is there. You have already studied matrix multiplication. Now there are some special type of matrix. Transpose, interchanging rows and columns of the matrix, we get transpose of the matrix. So these are the special types of matrix. So now inverse of the matrix, you already know what is the inverse of the matrix. Inverse of the matrix, A inverse is nothing but adjoint A upon determinant of A. So here we will be finding inverse by using a special technique, Kelly-Hamilton theorem. We can also use row transformation to find the inverse, which we will solve when
it will be needed. Now, some special type of matrix are there, which is known as symmetric matrix. A square matrix equals to its transpose is called symmetric matrix, and there is a skew symmetric matrix. A square matrix equal to the negative of its transpose is known as skew symmetric matrix. Now, when we proceed in terms of matrix, since matrix cannot be reduced to a single number, means matrix cannot be solved. So what we will do? Matrix is just like catalyst. It will give you solutions of linear simultaneous equation. It will transform linear simultaneous equation into simpler one, and from that we can get solution. So how we shall proceed? We need some properties. What are these properties? Properties are nothing but elementary transformations. So elementary transformations are like the building blocks of matrix operations. They are simple, inversible operations that can be applied to a matrix to transform it into a more convenient form. मतलब जब भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करना है कुछ मैट्रिक्स से, तो हमें रोज और कॉलम चेंज करने हैं, तो हम डायरेक्टली रैंडमली नहीं कर सकते. वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, certain properties, certain operations. These operations are known as elementary operations. When rows are operated, we call elementary row. When column is used, we call column transformation. So what are elementary rows? We have 3 elementary row and 3 column. Means swap of rows in number 1. We can interchange any 2 rows or column. This is very important elementary transformation. Another, scale a row means multiply a row by non-zero number. We can multiply a row by a non-zero number. This is another elementary transformation. Another transformation is add a multiple of one row to other, means addition of a constant multiple of a row to any other row. It is denoted by this symbol. तो यहाँ पर मैंने रो के लिए बताया है, when we shall use column, we will use C instead of R. So here you see these are the same transformation which will be applied in columns. So we have total 6 transformations, 3 rows and 3 columns. So where we will be using this transformations? Where we will be using these transformations? Suppose we want to find inverse of the matrix, so we will use row transformation. To determine the rank of the matrix, we will be using row transformation. We want to perform Gaussian elimination, means if we want to reduce a matrix to upper triangular or lower triangular, it is known as Gaussian elimination. We will be using row or column transformations. So here you see the properties of elementary transformations. Elementary transformation preserve the solution set of a system of linear equation. Means elementary transformation do not change rank or order, but internal properties of the matrix change. So elementary transformation can be represented by elementary matrix. The rank of a matrix is like its dimensions or number of independent rows or columns. It is fundamental concept of linear algebra. So now, knowing all these basic things of matrix, the important thing is rank. So your syllabus of engineering mathematics level 1 of unit 1 starts from here. In matrix, so far we have discussed some elementary properties, but your syllabus starts from rank. You will get questions from rank onward. So we shall discuss this rank properly. Now what is the rank? You see the rank of a matrix. The rank of a matrix A denoted by row A. Row is nothing but Greek letter. Row A is the maximum number of linearly independent rows or columns. Means the number of linearly independent rows or columns present in a matrix gives you the rank of a matrix. So certain properties we have to
ट्रांसफॉर्मेशंस रो और कॉलम, तो कहाँ कहाँ हम रो लगाएंगे, कहाँ कहाँ कॉलम लगाएंगे। तो रैंक निकालने में आप रो लगा सकते हो, कॉलम लगा सकते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखो, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, दोनों के सेम आएंगे। आइदर यू कैन यूज रो, यू कैन यूज कॉलम। The rank of a matrix is equal to the rank of its transpose. This is also important property. The transpose and its matrix, they have same rank. Also, the rank of a matrix and its equivalent matrix are same. If means two matrices are equivalent, then their rank is same. Now we shall discuss, there is another important properties of rank, nullity theorem. So we get sometimes we get questions on nullity. Nullity is nothing but rank plus nullity is equal to n, where n is nothing but order of a matrix. This happens in square matrix. Suppose a rank of a matrix is 3. Suppose the rank of a matrix is 3. So here this is nullity. Suppose the rank of the matrix is 3 and nullity, we want to find nullity, and order of the matrix is 2, then nullity will be equal to -1. So in this way we can find nullity, और -1 में नहीं लिखते उसको, फिर हम +1 कर देते. Now methods to find a rank. How we can find a rank? So we can reduce a matrix to upper triangular matrix. This property is known as echelon form. Here this is important. This is the name after a scientist. So we will reduce a matrix to its echelon form. Echelon form is nothing but upper triangular matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो और हर रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो में 1 हो. जैसे ये देखें 1 2 3 0 7 2 0 0 5, ये अपर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स रेड्यूस हो गया. इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं एक्लॉन फॉर्म. अगर हर रो का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट 1 1 हो जाए तो इसको एक्लॉन फॉर्म कहते हैं. ना भी 1 हो तो भी ये रैंक दे देगा. सो रो help us to reduce a matrix to upper triangular matrix, which is known as echelon form, and then the number of non-zero rows is called the rank. इसी तरह कॉलम से भी निकाल सकते हो. कॉलम echelon फॉर्म में भी आप रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग कॉलम. कॉलम में भी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा. तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहेंगे, ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाएंगे. सो 1 0 0 2 3 0 1 5 6. इसमें देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल है. प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हैं. इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हैं. इसको अपर कहते हैं और इसको कहते हैं लोअर. सो व्हेन वी यूज कॉलम, the matrix get reduced to lower triangular matrix. Then rank is number of non-zero rows in upper or lower triangular matrix. So you can use both row or column transformation to find the rank. Now we shall discuss some examples on rank. We shall discuss some examples on rank. तो यहाँ देखें ये important है. अब आप रैंक के ऊपर थोड़ा एक एग्जाम्पल देखें इसमें. तो ये जो आपका पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, थोड़ा सा लिख के मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है क्या. ये मैंने रो वाइज ऐसा लिखा है जो आपको यहाँ दिख रहा है. इसका पहला रो है एलिमेंट का 1 2 3. दूसरा है 2 4 6 2 4 6. तीसरा है इसका 3 6 9. So 3 6 9. So this is a matrix जिसका हमें रैंक निकालना है. तो अब देखो इसमें हमने 1 की सहायता से इस वाले को हम 0 कर सकते हैं, इसको हम 0 कर सकते हैं बिलो प्रिंसिपल डायगोनल. तो हमने क्या लगा दिया, बाई यूजिंग R2 reduces to 2 times of R1. ऐसा कर देने से ये 0 हो जाएगा. और
again by using R3 with R3 minus 3 times of R1, 3 times of R1। ऐसा करने से ये वाले दोनों एलिमेंट ये तो जीरो हो जाएंगे और इसके साथ पूरी की पूरी ये रो जीरो हो रही है। तो इधर क्या आ रहा है? सो दिस ए मैट्रिक्स इज reduced to means it is equivalent to matrix 1 2 3 2 minus 2 0 0 0 और ये भी रो तीसरी जीरो आ रही। तो अब देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 है, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। सो वी कैन राइट रो फॉर रैंक दिस इज इक्वल टू 1। तो यही मैंने इसमें आपको बताया है कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। तो ये देखो निकाल के यहाँ बताया है, ये आपका रैंक है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 आ गया। तो हमने इसको अपर टेबुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया। अब आप इसको भी देखें, ये एग्जांपल, ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट जीरो हैं। सो ये मैं लिख देता हूँ 1 0 0। तो पहले रो का एलिमेंट 1 0 0। अब दूसरा रो का एलिमेंट 0 1 0, सो 0 1 0। तीसरे रो का एलिमेंट 0 0 1 0 0 1। ये आपका तीसरे रो का एलिमेंट, मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। all elements of principal diagonal are unity and rest of the elements are zero and it is a square, so it satisfies the property of unit matrix, so it is identity matrix। अब ये ऑलरेडी देखें किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी डायगोनल फॉर्म में है। इस 1 के नीचे दोनों एलिमेंट जीरो है, फिर सेकंड में इस 1 के एलिमेंट ये जीरो है, मतलब ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इसमें 3 है, 1 2 3। सो रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू 3। सो दिस इज ऑलरेडी इन इक्लोन फॉर्म। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है, ऊपर के। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हियर ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, 3 नॉन जीरो रो 1 2 3, या 3 रो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 3। सो हियर मैट्रिक्स ए इन एग्जांपल नंबर 3 इज रो वाइज देखें 1 2 3 1 2 3। दूसरा है 3 4 5, सो दूसरी रो 3 4 5 की है, और तीसरी रो 7 8 9, सो 7 8 9। ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखें हम एलिमेंट्री रो लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो। तो सबसे पहले हम इस 3 को जीरो कर देंगे बाय यूजिंग 1, 7 को जीरो कर दो बाय यूजिंग 1। कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, पहली बार में क्या लगाओगे? बाई R2। ये 3 R2 का एलिमेंट है, R2 reduces to R2 minus R2 reduces to R2 minus 3 times of R1, R1, और R3 reduces to R3 minus 7 times of R1। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू ये 1 2 3, फिर 3 minus 3 0, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, फिर 4 minus 6 -2 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 minus 9, ये 5 minus 9 ये -4 आ जाएगा, ये -4, ये मैट्रिक्स है। इसी तरह 7 minus 7 ये 0 आ जाएगा, 8 minus 14 ये -6 आ जाएगा, 9 minus 21 ये -12 आ जाएगा। ये आपका आ गया अभी।
पहले एलिमेंट के नीचे वाले कॉलम, पहले कॉलम में पहले एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो गए। अब सेकंड स्टेप में हम इस सेकंड रो की सहायता से -6 को जीरो कर देंगे। तो देखें यहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, बाय यूजिंग R3 reduces to R3 माइनस ये 6 है तो यहाँ 6 लाना है, 2 की सहायता से 6 ले आए। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स R2। ऐसा कर देने से क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, देखें दिस इज रेड्यूसेस टू, पहला 1 2 3, दूसरे में आया था 0 -2 -4, अब ये लास्ट का 0 और -6 + 6 0 -12 + 12 0। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इसमें 2 बची, 1 2, अपर रेक्टेंगुलर में रेड्यूस हो गया, एक्लॉन फॉर्म में रेड्यूस हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 2, लास्ट की रो 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रैंक। Rank is very important. Knowing rank, you will be in a position to solve linear simultaneous equation very shortly. So, student, in next class, we shall discuss solution of linear transformation. We shall discuss solution of linear simultaneous equations. क्लियर नहीं सर, क्लियर, ये स्टॉप कर दो।